सपोर्ट्स हैं वो इक्वली लोड को शेयर कर लेंगी. सो देयर इज नो नीड ऑफ द equations of equilibrium in this case. So you directly calculate the total load acting area of triangle and divide it by 2. So you get the reactions RA and RB. So this is the first step. Then second step is section the beam. Section between A and C. तो ए और सी मतलब जो उसकी हाफ लेंथ है, हम इसमें सेक्शन करेंगे कहीं भी एट ए डिस्टेंस एक्स, और shear force और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे. So I will do the section anywhere. Let's say I do it here. And draw the free body diagram. जो इससे पहले वाला लोड है, पहले वाली बीम है, इतने पोर्शन की मैं बनाऊंगा. राइट. सो लोड विल ऑल्सो, जैसे मैं बीम को कट करूंगा तो लोड भी कट हो जाएगा लाइक दिस. सो लेट अस से ओवर हियर जहां पे मैंने सेक्शन पास किया है वहां पे लोड की वैल्यू है डब्ल्यू डैश है. राइट. तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ए के ऊपर लग रहा है, लोड लग रहा है WL/4. Now this distance is distance x. And a cut section, at a cut section we have shear force Vx and a bending moment Mx जो मेरे को calculate करना है. Okay. So I have taken section between AC at a distance x from point A. And draw the free body diagram of left hand side. Okay. तो ये मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है. पॉइंट ए के ऊपर लोड 0 है. इट विल इंक्रीज टू सम वैल्यू whose value is let's say W dash. अब यहाँ पे जो लोड है this value, so this is W dash. Okay. So सबसे पहले मेरे को ये W dash कैलकुलेट करना है. Right. So for this let us say this point is D, this is E, this point is E, and this is F. तो ये मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं AEF and triangle ADC. So right, triangle AEF is similar to triangle ADC. So both are similar triangles. So अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशियो है वो सेम रहती है. सो EF अपॉन DC is equal to AF upon AC. Okay. So this EF is W dash and this DC is equal to W. So दोनों की रेशियो ले ली मैंने. फिर ये वाली रेशियो AF is the base of small triangle and AC is the base of bigger triangle. Right. Now I write EF. EF is equal to W dash upon W equal to X upon L/2. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे so this EF is equal to W dash, then DC is equal to W divided by DC, then AF is equal to distance X, and this AC is equal to L/2. Now from here I write load W dash is equal to 2WX by L. Okay. So this is the first step that you need to determine this W dash because I'm going to use it further. Now I apply equations of equilibrium. First, say sum of all the horizontal forces equal to 0. This will be not applicable. तो ये लगेगी नहीं. दूसरी लगाएंगे sum of Fy equal to 0. Positive upward. Right. अब यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है और अपवर्ड कौन सी लग रही है? दिस इज अपवर्ड. सो आई राइट WL/4. दिस इज एक्टिंग अपवर्ड.
Now downward force is this total area of this triangle, small triangle, right? So minus 1/2 into distance x, इसका base, और इसकी height w dash into w dash, right? Then this Vx is also acting downward. Minus Vx is equal to 0. Right? Shear force will be equal to WL/4 minus 1/2 x into w dash. Now what is w dash? It is 2wx/L. तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. So I simplify, I write Vx shear force is equal to WL/4 minus this 2 will cancel with this 2. ये आ जाएगा WX² L. I call it, let's say 1. Call it. से पहले मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाई. So this is 1 and this is 2. Now the shear force is a function of x and x is having power 2. इसकी maximum value 2 है. So shear force will vary in a parabolic manner. Shear force varies parabolic manner. तो ये पैराबोलिक मैनर में वेरी करेगी. अब मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं. आई कैन ड्रॉ ओवर हियर. ओके, आई ड्रॉ लेटर ऑन. मैं बाद में ड्रॉ करूंगा. फर्स्ट इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. राइट, एट x इक्वल टू 0. सो पॉइंट ए आ जाएगा. जब x की वैल्यू 0 रहेगी, की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट ए के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी WL/4. यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरे पास WL/4 बच जाएगा. shear force is equal to WL/4 and it will vary parabolically. Then I calculate at the center. At x equal to L/2, we see that is at center WL/4 minus WL into L/2 का स्क्वायर. सो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने L/2 पुट कर दी है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी L²/4. राइट, L will cancel, you get 0. So at the center the shear force will be 0, right? And at point A it is WL/4 and it will vary in a parabolic manner. Now I have calculate bending moment. For bending moment, sum of all the moments about point x equal to 0 पॉजिटिव क्लॉकवाइज. तो जहां पे मैंने उसको कट किया, इस पॉइंट के राउंड मैं बेंडिंग मोमेंट लूंगा. सो आई विल टेक बेंडिंग मोमेंट्स अबाउट दिस पॉइंट. Right. So take moment about this point. First is moment of this WL/4. It is WL/4 into x. Force into distance. It will be positive because this will rotate the beam in clockwise direction. Then the moment of this total force. Now this total, first of all, I write this will be negative because this will rotate the beam in anti-clockwise direction. So minus force. Now total force is area of triangle. Half of x into w dash is the total force. Now how to measure distance for this triangle up to point x? So we will assume that this total force जो ट्राइंगल की फॉर्म में एक्ट कर रही है वो नीचे को लगेगी और ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे लगेगी. राइट, तो इसका सेंट्रॉइड मैं यहाँ पे बना रहा हूं. तो आई टेक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड. So this distance I have to take. So this is x/3. तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, so this is x/3.
तो सेंट्रॉइड से मैं कट पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक, this distance I have to take. So I write this is as x by 3, then minus mx equal to 0. Now from here I write the value of mx. mx is equal to wl by 4 into x, इसको लिख लिया. फिर माइनस half of x into w dash. Now w dash is 2wx by l into this x by 3, like this. So I write mx will be equal to wl by 4x. So this 2 will cancel and I write minus w x cube. मेरे पास 3x हो गए, x into x into x, x cube divided by 3 into l. Call it 3. So the bending moment will vary in a cubic parabola because x is power 3. So इसकी power 3 है, so this will be again a parabola which is in a cubic form. Right, I calculate the values at x equal to 0. ma will be equal to 0. यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है. Now at center at x equal to l by 2 I calculate mc will be equal to, जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा wl by 4 into l by 2 minus w by 3l into l by 2 का cube. So if I simplify I get mc equal to wl square by 12. Now I can draw the diagrams, right? So अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं. I draw over here. So first I draw shear force diagram. Like this and mark the center. At point A, this is B and this is center C. At point C, the shear force is 0. Okay. See the values. So at point A, it is WL by 4, and at point C it is 0. Okay, and it is very in a parabolic manner. So इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ. See this. At point A, first I mark the value. So this value is WL by 4 and C पे 0 है, and I connect with a parabolic curve like this. Like this. So this is positive. And अब मैं यहाँ पे मैंने हाफ डायग्राम ड्रॉ की है बिकॉज द बीम इज सिमेट्रिक. हमारी बीम सिमेट्रिक है, तो जितनी डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी उतनी ही राइट हैंड साइड पे बन जाएगी. तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लूंगा, बट इन अपोजिट, like this. It will go like this, negative. So this is shear force diagram. Then similarly I will draw the bending moment diagram under this. This is point A, this is point B. Point A पे 0 है. It is maximum at the center. This value, whose value is WL square by 12. So I connect with a parabolic curve like this. Then due to symmetry, it will go like this. So it's a parabolic curve like this. So like this. So this is BMD.